सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से वीडियोस अपलोड कर ही रहे हैं और उसकी क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे 120 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। सो जिसकी पहली डिक्टेशन मैं आपको देने जा रही हूँ 1000 वर्ड्स की 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर। तो लेट अस स्टार्ट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। Mr. Deputy Speaker, sir, we are happy to debate this important subject once more. As you know, the defense debate should necessarily concern all of us, and it should be based on a national consensus. It is not a one party business or a one man show. It concerns the entire nation, its security and liberty, as without a strong country, everything else has no meaning. Therefore, all valid viewpoints expressed must be taken into account in evolving such a policy. We have been warned about various threats as evident in this report of the Defense Ministry, and my only criticism, if at all I should say, is that a time has come when this nation expects that those threats and our counter postures to meet those threats must be spelt out more wisely. By this, I mean that one who studies this report, unless one has access to various other documents available in abundance elsewhere, one cannot arrive at a position as to what exactly we are trying to do in order to meet the so called threat which I certainly assert there is. I think a time has come when the country should be taken into confidence, when the members of parliament should be taken into confidence as to what exactly we mean and what exactly we are going to do, and a slightly better understanding should be reflected by the defense ministry towards this point. I certainly do not wish that classified items are to be made available. They are certainly the prerogative of the administration to keep, but they should give us, at least in general terms, what we are expected to know. Nearly 55% of the last year's defense budget was spent on the rise in the costs of petroleum articles, oil, fuels, lubricants, and the rise in pay scales, pensions, and allowances, etc. It hardly left for the entire defense budget a balance of 40%, which goes to make the real hard punch. And so it remains this year also. This position has to be rectified in the coming months, and that is a cause for concern. I have the greatest regard for the Honorable Defense Minister, and I know that he is a man of action and that he will take this point into account so that our defenses do not lack the punch that we want to have. The threats, as spelled out in the report of the ministry, are mainly from the north and west, and as far as they go, they are right. As far as the threat from the west is concerned, it is more positive. I do not foresee anything to come out of that cold state in the north. But if you look at the West, the defense budget of Pakistan has increased by 25% in the last year. From 1981, they have increased their budget 50%. They have raised 3 infantry
divisions and one armored division. Not only that, they say that Pakistan will settle outstanding differences with India from a position of strength. We, on the other hand, have the same commitments as we had before 1971. That should be an indication to those who understand this matter that our commitments remain the same. Our ratio of forces on the western sector necessarily has not improved as one would like them to do. Together with this, the leadership of Pakistan is known for diverting the attention of their people from the various troubles that they have inside their country and creating tensions along the western border, which concerns us. We have had the sad experience of having three major wars in the last 40 years. The increase in the Air Force of Pakistan has also to be noted. It is no good just not giving any importance to the idea that they do not have an industrial base and therefore it does not constitute any threat to us. I beg to remind the House that initially and basically they and we are from the same race, from the same stock, possessing the same skill and the same resourcefulness. So, one should not underestimate the capacity that they have for doing all this. I wish to say in all humility that specially attention must be paid towards this. They are now getting in the pipeline perhaps some more missiles and more anti-tank weapons and aircrafts which give them a qualitative edge over us. Now, the other factor that needs to be taken into account is China's own way of thinking. Compelled by its own national security angles, it has left its old narrow position and has now gone into a lot of technical and technological cooperation with the Western countries. So, there should be no doubt that when production starts flowing out of China in this new generation of armaments, it will certainly flow into the pipeline to Pakistan. All these factors should be taken into account by the Ministry of Defense. Sir, concern has been voiced in the report on the threat from the sea that is the Indian Ocean. It is so obvious that old colonial countries and those who have a little hand over that outlook have not forgotten the showing of the flag through the old gunboat diplomacy or now in modern parlance called force diplomacy, especially the superpowers who tend to interact into local disputes and get opportunities for intervention in such matters. No presence of any external powers is what we stand for, and this is what our aim should be. But together with this, we should not neglect the littoral states of the Indian Ocean. Four of these littoral states have got a very modern, well developed submarine arm. Seven of them have got the latest guided missiles, and one of them has made a very big base right next to the neighbor in the west into the Indian Ocean, which looks meaningfully. Stop. Write down the last line first, and then we are going to the difficult words. तो स्टार्ट करते हैं और आपको ये मैंने जो पैराग्राफ दिया है ये प्रोग्रेसिव में से दिया है, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं नेसेसरीली, ठीक है, वेरी इजी वर्ड. और
देन नेक्स्ट इज डिबेट। डिबेट में बताना चाहती थी कि डी के बाद बे जो आप बी आधा डालेंगे, ए की बिंदी डालने से आपका वर्ड जो है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। कंसेंसस, इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, CON, ठीक है, SENSUS, कंसेंसस के स्पेलिंग याद करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी को बड़ा इजी आउटलाइन दो, ये लो, ये हो गया सिक्योरिटी अंडर द लाइन, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी हो गया, ठीक है। और मुझे लिखने की वैसे नीड नहीं है, यू नो एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद आता है ये एक साथ वर्ड है व्यू पॉइंट्स, तो इसी को एक साथ ही हम लिख देंगे, दिस इज वन वर्ड, व्यू पॉइंट्स, ठीक है। देन देयर इज क्रिटिसिज्म, ओके। देन अकाउंट, अकाउंट में आउ का वोवल जरूर डालना है। देन अबंडेंस, अबंडेंस ऐसे आप डालिए, स्पेलिंग याद करने, BUNDANCE, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल्सवेयर है, एल्सवेयर को ऊपर डालिए, ई की बिंदी लगाइए। थ्रेट में ई की बिंदी लगाने से खराब नहीं होगा, कई बार ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे अब हो गया तो देर फोड़ ना पड़ जाओ, तो इसीलिए आप थ्रेट में ई की बिंदी जरूर डालना, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया है सो कॉल्ड, तो सो डालो, के डालो, एल नीचे थिकन करके काट दो, सो कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है लुब्रिकेंट्स, नीचे बिंदी डालिए, CANTS होता है लुब्रिकेंट्स। फिर मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट चीज और इसमें क्या आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड जो है वो आया है प्रेरोगेटिव, ठीक है। अगर तो आप बहुत फास्ट लिखना चाहते हैं तो प्रेरोगेटिव इतना भी लिख सकते हो, अदरवाइज प्रेरोगेटिव ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी उसकी आउटलाइन की तैयारी कर लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम लिखते हैं ये कम, ठीक है। कम में, कम के बाद कमिंग, कमिंग में बिंदी डाल दो, ठीक है, ये आ गया आपका कमिंग। और अगला वर्ड इसमें आ रहा है, जैसे केम आता है तो के और एम, ठीक है, और यहाँ एक ही बिंदी डाल दो, ये आपका आ गया केम। ये वर्ड कभी आपके खराब नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी दिशा के बारे में बोलते हैं, द नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, तो ये आपको द इसमें हमेशा आगे लगेगा। अगर आपने बाय डिफॉल्ट वहां पे दा की बिंदी नहीं लगाई तो दी अपने आप लगा सकते हो, और इसके नीचे, क्योंकि अगर आप दो लाइनें डालते हो तो यू विल डेफिनेटली इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसके अगर आपने दा नहीं डाला तो आप अपने आप पुटअप कर सकते हो, जो कि आपकी गलती वहीं बच जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है पंच। अब नोट ओनली दैट, ठीक है, इसमें ओ का वोवल अगर आप टिक लगा के चलते हो तो नोट जो है आपको पढ़ा लेगा, ठीक है। देन कमिटमेंट्स, ठीक है। एंड देन वेस्टर्न कंट्रीज भी आता है, और यहाँ पे आया है वेस्टर्न सेक्टर, इसके साथ ही जोड़ दो, ठीक है, ऑन दी लाइन पे, ऑन दी लाइन के पॉइंट है ये। उसके बाद आता है ह्यूमैलिटी, ह्यूमैलिटी आया, ह्यूमैलिटी आपको इस तरह से रो से ऊपर लेके जाना है। स्पेशली में आप देखिए, स्पेशली में ई की बिंदी आगे पीछे आपने दोनों के, जैसे आपने ये पहले स्पेशल लिखा, स्पेशल के बाद ई की बिंदी यहाँ पर आप डाल सकते हैं स्पेशली करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से स्पेशली, ठीक है, तो दोनों बिंदी आप डाल सकते हैं। अंडर एस्टिमेट, उसके बाद आपका आ जाएगा अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट में आपने अंडर एस्टिमेट ये आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसाइल्स आ गया। सबसे बड़ी बात जो होती है एक शॉर्ट हैंड लिखने वाले के लिए वो ये होती है कि आपकी आउटलाइंस आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए, ठीक है। वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथी को समझ आ रही है या नहीं, ठीक है, आपके लिए वो ज़रूरी है। कंपेल्ड, डबल एल आता है, वो आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, देखो वो ये है, वो ये है कि देखो एक वर्ड है टेक्निक, ठीक है, उसके बाद ये आपका टेक्निक हो गया, ठीक है, फिर टेक्निकल, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ऑन दी लाइन पे सारे वर्ड रहेंगे आपके, ऑन दी लाइन पे आपने रखना है, ठीक है। यानी कि आपका टेक्निक हो गया, फिर उसके बाद टेक्निकल में कल निकाल दिया, और टेक्नोलॉजिकल में एन के बाद जे को डिसज्वाइन कर दो, ठीक है। इसकी आउटलाइन की तैयारी करना। फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया इसमें आर्मामेंट्स, अबव द लाइन एक ही बिंदी, आर्मामेंट्स। पाइपलाइन वर्ड वन वर्ड करके पाइपलाइन आ गया, पाइपलाइंस था, यहाँ पे आई का ओवर डाल सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में इसके सिरे को काट के रखोगे तो ये कभी भी आपका अपॉर्चुनिटीज खराब नहीं होगा, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, बेटर मार्क्स।
forgotten, ठीक है, इसको आप ओ का वर्ड डाल के जा सकते हो। उसके बाद वर्ड आता है डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लो एम ई की बिंदी, ठीक है, हिंदी लाइन आ गया आपका। उसके बाद वर्ड आता है इंटरेक्ट, ए की बिंदी डाल दो ऊपर। उसके बाद वर्ड आपका आता है स्पेशली, इधर ई की बिंदी और इस ई की बिंदी को जरूर डालो, ठीक है। और वर्ड, अब एक वर्ड आया है पार्लेंस, ठीक है, तो ये आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है पार्लेंस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पार्लेंस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग आप पढ़िए, PARLANCE, ये पार्लेंस वर्ड आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स इन मॉडर्न पार्लेंस, उसमें आया है इन मॉडर्न पार्लेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, यानी अब अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो उसको हम ऐसे कह रहे हैं। एक वर्ड इसमें आता है लिटोरल, ठीक है, तो कैसे लिखना है, लिटोरल, ठीक है, और ओ का वोवल डाल दो। तो ये इसका मतलब क्या होता है, वो वाले जो रीजन्स होते हैं ना, जो रीजन्स अलोंग द सी शोर, अलोंग द सी शोर, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड आपका नोन टू हो जाएगा, ठीक है, अलोंग द सी शोर, ठीक है। चलिए फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली डिक्टेशन में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलिए।